So, welcome to another Chai and Wine. Before I introduce today's speaker, you don't really have to write. Listen. Let me tell you about our next session. The next session will be held on September 1 at the theater, and it will be on observing the high energy neutrinos using the ice cube unit there. So now this brings introduction of our today's speaker. So today's speaker is Suman. Suman Tiwari comes from a small village near the Gorakhpur district of UP, and she has been to several places in pursuit of her education. Currently, she is working on protein and nanotechnology and something related to that at DIFR, and that's what she is going to describe to her work and her field to us today. So, all yours. Thank you, Yas. Thank you. Hello. Hello. Yeah. So, how is it visible there on Zoom? Yeah. Okay. Yeah. Hi, all. So, I think I would start with the question कि ये screen पे अभी आपको क्या दिख रहा है? What can you see? And can you guess the elements in the ring? Particularly, can you point the parts as well? Like, what element is supposed to be here in this part of the ring? Gold? Okay. And here? Ruby. That's ruby. Okay. So, what element is supposed to be here in ruby? Will you be surprised if I say here also it's gold? Okay. So here this gold is gold nanoparticle. The gold that you see here is solid gold in some oxidation state. And here it's a gold nanoparticle. And gold nanoparticle is wine red in color. And that's how ruby glass gets its color. So in churches or even in CST building, you see the red glasses. They're all silica. Glasses are made up of silica containing gold nanoparticles. So that's what I'll be talking about. At first, I'll explain you what nanoparticles are. Then I'll come to gold nanoparticles and I'll be telling you why we are discussing about gold nanoparticles. Why are these gold nanoparticles that important? And then I'll talk about some of my research, and I will also give you some thought experiments to do that, how to study protein and gold nanoparticle interaction and why studying this interaction is that important. Okay, so what are nanoparticles? Do you have an explanation? Nanoparticles? Nano. So can you give a number when someone says nano? What is that number associated? Yes, 9. So आपको पता ही है वैसे, बट मैं फिर भी एक स्केल आपके लिए तैयार करके लाई हूँ जिसमें है कि अगर वाटरमेलन का डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, एक पीरियड is close to 100 micrometer, a red blood cell is close to 5 micrometer, your nanoparticles have size from 1 nanometer to hundreds of nanometers. So any particle जिसका size 1 nanometer से hundreds of nanometer में होता है, उसे हम nanoparticle कहते हैं. अभी I think you guys are already convinced. You have a smartphone in your hand. Okay, I think 10-20 years ago or say like 50 years ago, it was unimaginable. टेक्नोलॉजी को इतना छोटा करके आपके पास लाना, और भी बहुत सारे मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में नैनो पार्टिकल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. इसका पूरा अगर आपको समझना है कि कैसे नंबर्स जो पब्लिश हो रहे हैं, आप ओवर द ईयर देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा बढ़ चुके हैं, from 200 to 1800. So and even शेयर मार्केट में भी नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा अभी चलन है. So आप इसे समझ सकते हो कि नैनो टेक्नोलॉजी, we talk about small particles, but there is a very famous quote that there's plenty of room at the bottom. इसका मतलब है कि if you go to nano regime, if you deal with nano particles, you can do a lot. You can bring many more technologies which someone cannot even imagine. Okay, so I think I've convinced you enough ki what are gold nanoparticles and why these gold nanoparticles are important.
नैनो पार्टिकल, सॉरी, बट नाउ आई विल कम टू व्हाट आर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। सो मैं पहले आपको केमिकली एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट आर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। आपने जो गोल्ड देखा था वो Au3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में था। गोल्ड को आप Au सिंबल से दिखाते हो, तो वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में था। अगर मैं उसी गोल्ड का कोई भी सॉल्ट लो, लेट्स से क्लोराइड सॉल्ट या कोई भी आप सॉल्ट लो, उसको आप किसी भी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन दो सच दैट कि वो Au0 हो जाए। So you know about oxidation state of elements. How many of you know that? Okay. So gold 3+ का मतलब क्या होता है? Au0 और Au3+ में आप कैसे डिफरेंस बताओगे? It has 3 less electrons. So what you call that species जो किसी चीज को इलेक्ट्रॉन देती है? Reducing agent. So you guys are aware, you guys know what reducing agents are? Anything which can give electron to any other species, that's called reduction, and that species is called reducing agent. So आप कोई भी reducing agent यूज कर सकते हो, जैसे पॉपुलरली लोग सिट्रेट यूज करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये बेस बनती है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बनने का। तो ये बहुत, आपके पास टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड, ये आपका Au3+ ही है। आप इसे हीट करते हो और आप सिट्रेट के प्रेजेंस में हीट करते हो, जिससे बहुत सारा Au0 बनता है। और एक एक Au0 आप ऐसे समझो कि एक एक न्यूक्लियस की तरह काम करता है, और एक Au0 पे बहुत सारे Au0 आते हैं, एंड आप इसे कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहते हो, काफी अच्छी स्पीड पे स्टर करते रहते हो। तो आपको ऐसे साइज में ये इवॉल्व होता रहता है विद टाइम, एंड आपको फाइनली 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक के साइज के गोल्ड पार्टिकल्स मिलते हैं जो रेड कलर के होते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो जैसा साइज है आपके गोल्ड नैनो पार्टिकल का वैसा कलर होता है। आप इसे किसको यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन, यूवी विजिबल के बारे में पता है, और देन यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन, यस, व्हाट डू यू नो अबाउट यूवी विजिबल? ओके 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 ओके, दैट्स गुड। तो अगर आपको कोई चीज रेड दिख रही है तो ये डेफिनेटली यूवी विजिबल में ही कुछ एब्जॉर्ब कर रही है और रेड कलर को एमिट कर रही है। मैं इसे और सिंपल समझाती हूँ कि ये है आपकी विजिबल लाइट। ओके, किसी चीज को अगर रेड दिखना है तो उसे ये सारी वेवलेंथ्स को अपने अंदर ले लेना होगा ताकि रेड रह जाए और रेड दिखे। या फिर अगर वो येलो से ग्रीन और ब्लू कलर की रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो रेड और वॉयलेट जैसा कुछ कलर दिखता है। नैनो पार्टिकल्स यही कर रहे हैं। ये जो इस कलर के आपको दिख रहा है, इट इज नॉट रेड, इट इज रेड, ब्लू एंड इंडिगो का मिक्सचर। सो इट इज बेसिकली एब्जॉर्बिंग ऑल द रेडिएशन जो विजिबल में यहाँ पे होती है। सो इट, अगर मैं इसे ग्राफ से समझाने की कोशिश करूं तो ये है आपके यूवी विज के सारे वेवलेंथ्स, लाइक हियर यू सी 450 to 750। ओके, और वो एब्जॉर्ब कौन सा कर रहा है? 500 to 600 और 650 के रेंज का। तो आप एब्जॉर्बेंस को अगर मैं इधर प्लॉट करूं तो आप इस रेड कर्व को पहले देखो, तो ये क्या कर रहा है? 500 to 600 को एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? तो बचा कौन सा कलर आपको दिखने के लिए? रेड, ये और ये। और गोल्ड नैनो पार्टिकल का कलर इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, पर अब जैसे जैसे गोल्ड नैनो पार्टिकल का साइज इंक्रीज करते हो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ता चला जाता है। तो वो एक पॉइंट पे इस रेड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके पास सिर्फ ब्लू कलर बच जाता है। तो आपका गोल्ड नैनो पार्टिकल ऐसा ब्लू कलर का हो जाता है। मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी अभी थोड़ी समय में आपको दूंगी। मैं ये आपको समझा रही हूँ कि अगर आप गोल्ड नैनो पार्टिकल की प्रॉपर्टी को पढ़ना चाहते हो तो आप सिर्फ सिंपल एब्जॉर्प्शन के ग्राफ से बता सकते हो, या फिर कलर देख के भी बता सकते हो। कलर देखना भी एक तरीके से एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को समझना है। आपका दिमाग बाय डिफॉल्ट समझ रहा है उस चीज को, यहाँ मैंने उसे ग्राफ्स के थ्रू रख दिया। आप बता सकते हो कि गोल्ड नैनो पार्टिकल किस साइज का है। सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल कि ये कितना है, 20 to 80 नैनोमीटर। अगर मैं इसे बोलने जाऊं तो आपको क्या करना है कि 1 मीटर के रिबन को 10⁹ टुकड़ों में बांटना है, और वो एक टुकड़ा या दो टुकड़ा या तीन टुकड़ा जो आप सोच भी नहीं सकते, अपने हाथ में पकड़ भी नहीं सकते, आप अपनी आंखों से बता सकते हो कि वो गोल्ड नैनो पार्टिकल किस साइज का होगा, किस वेवलेंथ से वो इंटरैक्ट कर रहे हैं।
फिलहाल ये बहुत ही इनडायरेक्ट मेथड है बताने का। डायरेक्ट मेथड भी होता है कि आप इसे सिंपली इमेज कर सकते हो। कुछ माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स कहते हैं, उनसे आप इन गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का साइज बता सकते हो। जैसा कि मैंने बोला कि ये लाइट से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये लाइट को कैसा स्कैटर करता है आप उससे भी एक साइज बता सकते हो। तो लाइट की स्कैटरिंग से आप नैनो पार्टिकल्स का रेडियस बता सकते हो, जिससे उनका डायमीटर, एंड अल्टीमेटली आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का साइज क्या है। तो मैं बोलूँ तो आपने बहुत केमिकली समझा कि व्हाट आर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, बट व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। इतना खास के बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स होते हैं, बट मैं पर्टिकुलरली आज गोल्ड नैनो पार्टिकल पे इतनी बातें क्यों कर रही हूँ इस, पहले आप इस वीडियो को थोड़ा देखिए। सो यू जस्ट सॉ कि गोल्ड नैनो पार्टिकल और वायरस का साइज एक बराबर है। वायरस आपके सेल्स में बहुत आसानी से घुस जाता है, राइट? तो अगर मैं सही गोल्ड नैनो पार्टिकल लूं, इस सही का डेफिनेशन मैं आगे आपको दूंगी, तो ये गोल्ड नैनो पार्टिकल्स आपके बॉडी में सेल्स में जा सकते हैं, और उनसे क्या फायदा होगा ये आप अभी देख सकते हो। ये पर्टिकुलरली कैंसर सेल्स में गए ये गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, क्योंकि इन्हें करेक्ट तरीके से मॉडिफाई किया गया था, तो ये पर्टिकुलरली कैंसर सेल्स में गए। सो आपने देखा अभी कि गोल्ड नैनो पार्टिकल रहने की वजह से आप इमेज कर पाए उन सेल्स को बहुत अच्छे से। गोल्ड नैनो पार्टिकल आपके कुछ सेल्स में गया, जिससे उन सेल्स की इमेजिंग बहुत आसान हो गई। प्लस सेल्स को किल करने का एक बहुत कॉमन तरीका होता है रेडिएशन। ये आप रोज भी एक्सपीरियंस करते हो, लोग कहते हैं ना सनस्क्रीन पहन के रहो, क्योंकि आपके सेल्स किल हो जाते हैं यूवी रेज से। तो अगर आपको कन्फाइंड तरीके से सेल्स को किल करना है, सबसे सही तरीका है कि आप उसमें कोई मेटल डाल दो, और कम रेडिएशन में भी मेटल उस रेडिएशन को एम्पलीफाई करेगा और आपके सेल्स किल हो सकते हैं। सो इसको कहते हैं रेडियोथेरेपी। तो आपने देखा कि आपने रेडियो इमेजिंग करी और फिर रेडियो थेरेपी करी। सेल्स को रेडिएशन से किल करना, किसी भी अनडिजायर्ड सेल को ही रेडियोथेरेपी कहते हैं। इस पे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं माइस पे। अगर आप गोल्ड नैनो पार्टिकल को किसी ड्रग से लोड कर दो जो ट्यूमर को ट्रीट कर सकता है, और आप उसे माइस में इंजेक्ट कर दो, तो वो सिंपल उस ट्यूमर सेल में जाकर के उस ट्यूमर की ग्रोथ को कम कर सकता है। तो इसने क्या किया, एक ड्रग डिलीवरी की। इसे कहते हैं कीमोथेरेपी। पर आप चाहो तो उस गोल्ड नैनो पार्टिकल की लाइट से इंटरैक्ट करने की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके उन ट्यूमर को लाइट से भी ट्रीट कर सकते हो, दैट इज रेडियोथेरेपी। ऑल्सो यू कैन सिंपली इमेज कि अगर आपने गोल्ड नैनो पार्टिकल पे कोई फ्लोरेसेंस स्पीशीज लगा दी है, वो आप यू नो अबाउट फ्लोरेसेंस, हम ओके। सो अगर आपके गोल्ड नैनो पार्टिकल पे फ्लोरेसेंस स्पीशीज होगी, तो आप ट्यूमर को ना सिर्फ ट्रीट कर पाओगे, बल्कि आप देख भी पाओगे सिंपल माइक्रोस्कोप जो फ्लोरेसेंस सेंसिटिव होते हैं। आप ऐसे कितने ड्रग्स के बारे में जानते हो जो लाइट से भी इंटरैक्ट करके सेल्स को किल कर सके और दवाई का भी काम कर सके? मेरे हिसाब से मार्केट में आज तक हमने कोई ऐसी दवाई नहीं सुनी जो रेडियोथेरेपी भी कर सके और कीमोथेरेपी भी। And that's why gold nanoparticles are that important, particularly in field of medicine, because they can serve dual purpose. They can diagnose the disease for you, they can treat the disease for you. You can also perform laser operations using gold nanoparticles बहुत अच्छे से। और कोई मेटल क्यों नहीं? क्योंकि आप जो भी मेटल सेल शरीर के अंदर देते हो, यू वांट देम टू बी एक्सक्रीटेड, यू वांट देम टू बी नॉन टॉक्सिक। once your purpose is served, you want them to get out of your body as safe as possible, and gold will do the job because it is an AU zero oxidation state. It is not going to react to anything. Okay,
सो व्हाई डू वी वांट प्रोटीन कोटेड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स? इसका आंसर मैं ऐसे शुरू करती हूँ कि आपने देखा कि आपने जो भी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स लिए वो पर्टिकुलरली ट्यूमर या कैंसर सेल्स में गए, किसी और सेल में नहीं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? ओके, कैंसर सेल को कैंसर सेल क्यों कहते हैं? कभी ऐसे सुना है लोकल टर्म में? आसपास में लोग बोलते हैं कि इनके ब्लड कैंसर हो गया या ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो कैंसर बॉडी के किसी पार्ट में हुआ है, ठीक है, तो उसे कैंसर कहेंगे क्यों? कैंसर सेल्स वो सेल होते हैं जो अपना रेगुलेटेड डिवीजन खो देते हैं। आपके सेल्स हमेशा एक रेगुलेटेड तरीके से डिवाइड करते हैं, इसी वजह से बच्चे एक प्रोपोर्शन में बड़े होते हैं और बड़े एक प्रोपोर्शन में बूढ़े होते हैं। पर अगर वही डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो रही हो तो उसे कहते हैं ट्यूमर, और वो ट्यूमर अगर आपके शरीर में कहीं भी घूम सकता है तो उसे कहते हैं कैंसर। अनकंट्रोल्ड डिवीजन का मतलब है कि आपके सेल्स के किनारे मेम्ब्रेन ठीक से नहीं बनी, या सेल का कोई भी एक चीज ठीक से नहीं बना है, और वो सेल बहुत ज्यादा खाना खाता है। आप जो खाना खाते हो मोस्ट ऑफ द खाना कैंसर, आपके अगर किसी के शरीर में कैंसर होता है तो वो दुबला क्यों हो जाता है? क्योंकि ज्यादातर ग्लूकोज प्रोटीन वो सारा उन सेल्स में जा रहा होता है। ये अगर आप इसको कायदे से यूज करो तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को आप चाहो तो ग्लूकोज और प्रोटीन से कोट कर सकते हो, जो पर्टिकुलरली कैंसर सेल्स में ही जाएगा, क्योंकि कैंसर सेल्स अब बेसिकली एक हब बन चुके हैं जहां पे आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। जैसा मैं आपको समझाती हूँ, ये एक सिंपल गोल्ड नैनो पार्टिकल, इस पे हमने कोई कोटिंग नहीं की। ये पहले सेल मेम्ब्रेन से इंटरैक्ट किया। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज आउटसाइड द सेल, दिस इज इनसाइड द सेल, एंड सेल मेम्ब्रेन ने, सो इट्स लाइक बहुत कम चांसेस है कि सेल मेम्ब्रेन इसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये सिंपल गोल्ड नैनो पार्टिकल, इट्स गोल्ड एटम ऑल। बट अगर इसने इसे एक्सेप्ट भी किया तो बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में थोड़ी ही समय में इस गोल्ड नैनो पार्टिकल को बाहर निकाल दिया जाएगा, और बहुत कम गोल्ड नैनो पार्टिकल होंगे जो आपके साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, तो गोल्ड नैनो पार्टिकल को बाहर निकाला क्यों गया? इस कि गोल्ड नैनो पार्टिकल एक फॉरेन सब्सटेंस है आपके लिए, और आपकी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को सेल के अंदर नहीं आने देगा। तो मैं आपको एक केस देती हूँ जहां पे मैंने इतने सारे गोल्ड नैनो पार्टिकल लिए। पहले केस में मैंने क्या किया है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल के किनारे बहुत सारा चार्ज कुछ लगा दिया है, ओके। दूसरे में मैंने अलग अलग शेप्स के गोल्ड नैनो पार्टिकल ले रखे। तीसरे केस में मैंने अलग अलग साइजेस के गोल्ड नैनो पार्टिकल ले रखे, से आप बहुत छोटे गोल्ड नैनो पार्टिकल्स भी ले सकते हो। और चौथे में मैंने गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को प्रोटीन, लिपिड या जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे डीएनए, उससे कोट कर दिया है। इन चारों केसेस में आप बताओ कि कौन सा गोल्ड नैनो पार्टिकल आसानी से सेल्स में जा सकता है? लिपिड। फिर आपका मेम्ब्रेन जो होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज होता है। सेल मेम्ब्रेन जनरल में नेगेटिवली चार्ज होता है, आप बहुत जगहों पे ये चीज पढ़ पाओगे। तो अगर मैं गोल्ड नैनो पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज करूं तो ये क्यों नहीं जाएगा और ये क्यों जाएगा? ओके, लेट्स से it has negative charge, it is lipid but it has negative charge na, then why? Huh? It does not allow polar molecules to go, but your membrane is coated with many proteins which is positive and negative charge, so overall membrane has a negative charge. Now suppose it is also negative charge, why will it go near the membrane? पहले ही रिपल्शन हो जाएगा ना नेगेटिव नेगेटिव का। तो आप बताओ कि ये क्यों नहीं जाएगा और ये क्यों चला जाएगा? जाएगा तो ये आपने सही आंसर दिया, कुछ और सोच सोच पा रहे हो? हाँ, या लाइक सो दिस इज समवॉट द आंसर इज लाइक कि डेफिनेटली चार्जेस की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होगा, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होंगे, ठीक है। बट ये जो लिपिड्स होते हैं ना, ये अपने आप में बहुत रीऑर्गेनाइज होते रहते हैं, तो वो जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। वो नेगेटिव न्यूट्रल होता रहता है, जिसकी वजह से लिपिड से कोट करने से आपके नैनो पार्टिकल्स बहुत आसानी से सेल्स में जा सकते हैं। बट जैसा मैंने बोला लिपिड नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उसे वेट करना होगा कि आपका मेम्ब्रेन कब ऐसा जगल कर रहा है कि आपका नैनो पार्टिकल को ले सके। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने नैनो पार्टिकल्स को बहुत सारे बायोमोलिक्यूल, जिनके बारे में और आगे समझाऊंगी,
कोट किया तो ये नैनो पार्टिकल आपके सेल के लिए फॉरेन नहीं रहा, अब आपके सेल्स इनको ले सकते हैं। बट बायोमोलिक्यूल्स में भी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज डीएनए, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हाउ मेनी ऑफ यू नो द डिफरेंसेस बिटवीन दीज बायोमोलिक्यूल्स एंड व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस? क्या आप सब सुन पा रहे हो इन्हें? ओके, तब ठीक है। ओके, तो लिपिड्स में जैसा, लिपिड्स इज बेसिकली इट्स नॉट मेड अप ऑफ फैट्स। हाँ, सो लिपिड्स आर समथिंग, अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूं, यू नो अबाउट हाइड्रोफोबिक स्पीशीज, या यू नो अबाउट हाइड्रोफिलिक स्पीशीज, lipids will be considered as a hydrophobic species. Okay, your carbohydrates and DNA will be considered as a hydrophilic species. But with proteins there is something particular. Proteins can be both hydrophobic and hydrophilic. Okay, तो ये केस देखते हैं। ये एक स्टडी है जिसमें एक माइस था, उसका एक न्यूरॉन इंजर्ड था। ओके, जिस ग्रुप ने ये स्टडी की उसके पास ऑप्शंस थे कि वो लिपिड ले सकता है, डीएनए ले सकता है और प्रोटीन ले सकता है। ओके, उसने लिपिड भी लिया, डीएनए भी लिया और प्रोटीन भी लिया। डीएनए तो पहले ही कुछ काम नहीं किया, सो डीएनए वाज रूल्ड आउट। पॉपुलर केस था लिपिड और प्रोटीन लेना। तो जो ये न्यूरॉन, बेसिकली ये न्यूरॉन जो इंजर्ड था, उसके सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स आ गए थे। ओके, तो प्रोटीन, उनका जो स्पेशल प्रोटीन उन्होंने लिया, इट वाज बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ दिस प्रोटीन व्हिच वाज ऑलरेडी देयर ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूरॉन। ओके, प्रोटीन्स, जैसे जैसे आपने बोला कि लिपिड्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, चार्जेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे बिकॉज दे विल बी ऑपोजिट। आप प्रोटीन्स में कुछ ऐसे सरफेसेस ले सकते हो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, और कुछ ऐसे ले सकते हो जो हाइड्रोफोबिक हो। सो वो आपके लिपिड से भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, प्रोटीन से भी इंटरैक्ट कर सकते हैं और चार्जेस को भी न्यूट्रल कर सकते हैं। तो जैसा इस केस में उन्हें मिला कि जब उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोटीन से अपने नैनो पार्टिकल को कोट किया, वो डायरेक्टली उन्हीं न्यूरॉन्स में गया जो इंजर्ड थे, और फिर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स उन न्यूरॉन्स में एक्यूमुलेट हो गए। जब उन्हें ये देखा कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स इस प्रोटीन से कोट करने की वजह से सेलेक्टिवली उस न्यूरॉन में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तब उन्होंने उस गोल्ड नैनो पार्टिकल पे अगली बार ड्रग दी, and then the drug selectively went into the right neuron and the neuron was functioning well after some time. So इससे ये पता चला कि आप गोल्ड नैनो पार्टिकल का यूज करके, बट सही प्रोटीन से कोट करके, आप उसे किसी भी पर्टिकुलर सेल में या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में बिल्कुल लोकलाइज तरीके से भेज सकते हो। एंड बहुत सारे ड्रग्स, जैसे आप सुनते हो ना कि ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिकॉज वो जहां टारगेटेड है जाने के लिए, उसकी जगह सेल्स में, आपकी बॉडी में कई जगह पे चले जाते हैं। तो गोल्ड नैनो पार्टिकल का ये फायदा होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट कम होंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम आती है और आपको साइड इफेक्ट्स ड्रग्स के कम दिखेंगे। तो आई थिंक मैंने आपको अभी कन्विंस कर लिया है शायद कि इन सारे बायोमोलिक्यूल्स में से प्रोटीन एक ऐसा बायोमोलिक्यूल होगा जिसको लेकर के आप गोल्ड नैनो पार्टिकल को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी। तो ये टिपिकल तरीका होता है गोल्ड नैनो पार्टिकल के किनारे किसी भी बायोमोलिक्यूल को लगाने का। या तो आप बीच पे कोई लिंकर लगा करके इन सारे बायोमोलिक्यूल्स को लगा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी इन सारे बायोमोलिक्यूल्स को गोल्ड नैनो पार्टिकल पे लगा सकते हो। ओके, सबसे फेवरेट कैंडिडेट जो रिसर्च कम्युनिटी का है वो है प्रोटीन्स। ओके, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रही हूँ, बस आपको ये बताने के लिए कि मैंने यहाँ पे आपको साइज के साथ गोल्ड नैनो पार्टिकल का क्या कलर होगा वो बताया था। मैं आपके लिए वो चार्ट वापस से खोल सकती हूँ ताकि आप मेरे इसमें आओ सर। It's not
It is not switching. Okay, doesn't matter. Okay. Okay. Is this the reference chart you're talking about? For the color? Yeah. Color and particles? Yes. Yes. So I will. What is it that you got in the tubes? These are gold nanoparticles, and I think audience will have to guess the size of these gold nanoparticles. You can. Okay, मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा है अगर मैं ये दिखा दूँ. This is the reference and this is the actual. So what she is expecting you to know is tell her is what is the size of the particle in the tube, right? Yeah. So the one Okay. in my hand is this is what size? This is 80. Okay. Okay. And the one in her hand is about Okay. 30, 40. Okay. So okay. Now I can move to this slide where I am going to demonstrate the thing. Okay. And now you're going to fix this or we put something else? Yeah. Okay. Your gold nanoparticles are always coated with some charge. Okay. Mostly negative charge. Now tell me if you have many gold nanoparticles with negative charge on them, will they come together or will they repel each other? Okay. Now what is the way? कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं उस negative charge को उस gold nanoparticle के surface से हटा सकूं. Just say it again. आप कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं इन गोल्ड नैनो पार्टिकल के किनारे जो नेगेटिव चार्ज है जो सिट्रेट की वजह से है मैं उसे हटा सकूं. You want to make the electrical Neutral, or I want to just replace. I can also replace the citrate with any other ion. I can put some salt. Yeah, very right guess. I have this salt solution with me. This is 10 molar sodium chloride. Okay. normal table. Huh? Normal table salt. Okay. Just any will do. What do you see now? Wait, I'll show you. Okay, so फिर से I should have attached it here, but फिर से एक बार मैं आपके लिए reference दिखा देती हूँ. Okay. Which color do you think this is? So this, it is absorbing बहुत ज़्यादा, and you're seeing mostly blue, dark blue. Even it is dark blue. Is it visible? So what I did, I just added salt to it. Now chloride is a very annoying neighbor which won't cap the gold nanoparticle but won't allow citrate to sit near the gold nanoparticle. So what is happening is all your gold nanoparticles are coming together in presence of excess sodium chloride. And then it is forming big aggregates, and that's how you see this color change. Now it will even turn black. It will absorb all the visible light. Now I'm going to show you the beauty of proteins. I don't have any proof, but you have to believe me that this is a protein, okay? It's very expensive, that's why I bought only a little bit of it. I have this another nanoparticle which is slightly bigger. It is supposed to aggregate even faster because it is big. But what I'll do is I'll add protein to it at first. And these volumes are all in milliliters, and I'm adding microliters of these. Okay, be salt, be protein. Okay, to say the concentration of protein,
here it is 10 molar. Okay, nanoparticles are in nanomolars, and your protein is in micromolar. So if I put it, concentration of nanoparticles is 1,000 times lower than concentration of protein, and these two together is more than 1,000 times lower than salt. Okay, so your protein concentration is 1,000 times lower than your salt concentration. 1,000 no, 1 के बाद 60 times lower than your salt का concentration. So I've added proteins. I'll mix it. And then I'm going to add the same amount of salt. What do you see now? Is there any color change like this? Okay, I added molars of salt and micromolars of your protein. And your protein is not allowing the gold nanoparticles to aggregate. Basically, it is not allowing the salts to replace the citrates or say the proteins from the surface and then cause aggregation of your gold nanoparticles. Can you explain me what happened here? If they can think. Okay. So, okay. Very simple thing. I have already answered in the slide. What you do is, okay, yes. Is it fine? Okay. What happened was, when I added protein to my gold nanoparticles, protein replaced the citrate and it capped the gold nanoparticles. So what was the case earlier here is that the citrate capped your gold nanoparticles. Okay. Now what protein did was, it replaced the citrate and capped gold nanoparticles. Now protein is way more competing than citrate, and it did not allow chlorides to replace. So as long as some capping agent is around your gold nanoparticles, it will never come close and it will never aggregate. So protein is a better capping agent than citrate. So what it does is it replaces the citrate, it caps the protein very strongly such that even you add molars of chloride, they won't be able to replace the proteins from the surface. Okay, and that's how your gold nanoparticles didn't aggregate even in presence of excess sodium chloride, because your proteins are sitting there and chloride cannot replace. So if you are to compare the sizes of protein and chloride, is that if this is the size of your protein, I can say like this is the size of your chloride. Okay, even if you coat this thing with chloride are not going to, can never knock out protein from this place. It can only sit on the protein, but it can never knock out the protein from the surface. And that's how. Are you saying that gold nanoparticles can neutralize? Can neutralize? No. Okay. If the person needs an explanation, I can provide with. Okay. So your proteins, they are made up of amino acids, right? I'll tell you what I'm coming. And if I say there are 20 amino acids, and your proteins are basically permutation combinations of these amino acids to different lengths. So your protein can contain 100 amino acids, or it can also contain 10,000 amino acids. When it comes to gold nanoparticles, there are only 2 amino acids which are very popular among scientists.
First is cysteine, yeah, as she guessed. Because cysteine is known to form a covalent bond with gold. Okay? And other is lysine. Lysine is known to electrostatically sit on a gold nanoparticle. The protein that I added right now does not have any cysteine to it. It had only lysine. Now, which bond is stronger, electrostatic interaction or a covalent bond? Covalent, you know, okay. But people say lysine also interact very strongly with gold nanoparticles. What we wanted to understand in our lab that if I put this lysine and cysteine in competition, which one is going to win? And when we started this question, the obvious answer that everyone had, since cysteine forms a covalent bond, definitely cysteine is going to win. So what I did was, I took a protein with too many lysines in it, and that was the protein that I added right now, with no cysteine. So these are the lysines. It has 7 lysines with different numbers. So you number the amino acids in a protein from 1 to, depending on how many amino acids it has. So it has these 7 lysines, but no cysteine. Now, one group had already studied that out of these 7 lysines, this lysine 42 and lysine 7 is the one which interacts with gold nanoparticles most strongly. Or I can say that if your protein go and sit onto a gold nano, if this protein goes and sits onto the gold nanoparticle, lysine, either it sits through lysine 42 or it sits through lysine 7. Okay, now prepare हो जाओ, मैं आगे छोटा एक्सपेरिमेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट आपके लिए कराने वाली हूँ, और आपको मैं आंसर्स भी दूंगी, आपको बस बताना है कि वो आंसर आया कैसे. ओके, तो मैंने क्या किया, इस लाइसिन 42 को सिस्टीन में बदल दिया. ओके, और इस लाइसिन 7 को भी सिस्टीन में बदल दिया. क्यों किया ऐसा? क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि लाइसिन 42 या लाइसिन 7 ही है जिससे आपका प्रोटीन जाके नैनो पार्टिकल से बाइंड कर रहा है, तो अगर मैं लाइसिन की जगह सिस्टीन लगा दूं तो और जल्दी बाइंड करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बाइंड करना चाहिए. ठीक है, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट में बता देती हूँ कि आप कैसे देखते हो कि बाइंडिंग हुई या नहीं. आप क्या करते हो, अपने नैनो पार्टिकल्स में प्रोटीन डालते हो, बिल्कुल जैसे मैंने भी डाला. फिर आप इन नैनो पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूज कर देते हो, तो आपके नैनो पार्टिकल्स और उनसे जो प्रोटीन बाउंड है सिर्फ वो नीचे आ जाते हो और बाकी फ्री प्रोटीन ऊपर रह जाते हैं. तो आप फ्री प्रोटीन को निकाल देते हो और आपके पास सिर्फ ये नैनो पार्टिकल बच जाता है जिसपे प्रोटीन बाउंड है. तो अगर कोई प्रोटीन बैठा आपके नैनो पार्टिकल पे, तो आपके नैनो पार्टिकल के साइज में चेंज होता है, क्योंकि प्रोटीन्स होते हैं 2 से 3 नैनोमीटर के और आपका नैनो पार्टिकल है 20 से 40 नैनोमीटर का. तो अगर आपका नैनो पार्टिकल x नैनोमीटर का है तो उसके साइज में x+5, x+2, x+3 कुछ तो चेंज आता है. और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप नैनो पार्टिकल्स का साइज देख सकते हो. कैसे? यूवी विज एब्जॉर्प्शन से. तो मुझे कुछ प्रोटीन में दिखा कि यूवी विज में शिफ्ट आया, मतलब प्रोटीन का साइज चेंज हुआ. मैंने लाइट स्कैटरिंग से भी देखा कि कुछ प्रोटीन की वजह से नैनो पार्टिकल का साइज चेंज हुआ. अब ये चार्ट देखते हैं. ये मेरा वो प्रोटीन है जिसमें सिर्फ लाइसिन, ये मेरा वो प्रोटीन है जिसमें लाइसिन 42 की जगह अब मैंने सिस्टीन डाल दिया, और ये मेरा वो प्रोटीन है जिसमें लाइसिन 7 की जगह मैंने सिस्टीन डाल दिया है. और मुझे क्या दिखा कि जिसमें सिर्फ लाइसिन था वो नैनो पार्टिकल से बाइंड किया था, जिसमें लाइसिन 42 की जगह सिस्टीन डाल दिया था वो बाइंड नहीं किया. मुझे उम्मीद थी कि करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर लाइसिन से बाइंड हो रहा है तो सिस्टीन से तो होना ही होना चाहिए, पर लाइसिन 7 वाला बाइंड हुआ. ओके, किसी भी एक्सपेरिमेंट से आपने देखा कि आपने लाइसिन को सिस्टीन में म्यूटेट किया है इस उम्मीद से कि सिस्टीन ज्यादा बाइंड करेगा, बट आपको एक सिस्टीन बाइंड नहीं करता दिखा और दूसरा करता हुआ दिखा. इससे आप क्या समझ पाओगे अगर आपके सामने ऐसी एक इंफॉर्मेशन रखी जाए? मैं इसका आंसर का बहुत ही सिंपल हिंट देती हूँ कि लाइसिन इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरैक्ट करता है, सिस्टीन कोवलेंट इंटरैक्ट करता है. आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब ये लाइसिन नहीं है तो इंटरैक्शन नहीं हो रहा है,
और जब ये लाइसिन होते हुए एक सिस्टीन है तो इंटरेक्शन हो रहा है, और जब ये लाइसिन ही है सिर्फ तब तो इंटरेक्शन हो ही रहा है। ओके, आप इससे एग्री करते हो कि ये लाइसिन 42 बहुत जरूरी है इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि जब ये लाइसिन 42 था तब तो बाइंड हुआ था, पर जब नहीं है तब बाइंड नहीं हुआ, राइट? और इसमें लाइसिन 42 है और बाइंड हुआ। तो अगर आपके सामने मैं ऐसे डेटा रखूं तो आप ये तो इन्फर कर पाओगे कि लाइसिन 42 बहुत जरूरी है। ओके, पर जब मैंने ये जो स्पीशीज जो इंटरैक्ट किए थे, जब मैंने इन दोनों को साथ में डाला तो मुझे दिखा कि ज्यादातर ये स्पीशीज बाइंड कर रही है और ये नहीं। मतलब पहले जरूरी है कि आपका लाइसीन रहे और फिर जरूरी है कि आपका सिस्टीन रहे। तो आप जो पढ़ते आए हो कि कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फास्ट इंटरेक्शन होती है और कोवलेंट बॉन्ड एक स्लो इंटरेक्शन होती है। तो हर जगह आप में से किसने थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा है? ओके, सो आपने पढ़ा हुई होगा कि काइनेटिकली फिसाइल रिएक्शन एंड थर्मोडायनेमिकली फिसाइल रिएक्शन। सो कोवलेंट इज thermodynamically favorable but not kinetically here. It means पहले बहुत फास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो जा रही है। अगर मैं आपके प्रोटीन को ऐसे दिखाने जाऊं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सरफेस दिखाना, कि आपके प्रोटीन में कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो आपके प्रोटीन का सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, तो अगर आपने इसे हटा दिया तो प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज हट गया और आपका नैनो पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज था उस पर आपका प्रोटीन जाके बैठ ही नहीं पाया। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका ये पॉजिटिव चार्ज पोर्शन रहे, तब जाके आपका प्रोटीन कहीं नैनो पार्टिकल पे बैठेगा और वहां बैठने के बाद अब उसके पास फ्रीडम है कि वो खुद को जैसा रीओरिएंट कर सके। और अब जब वो खुद को रीओरिएंट करेगा तो वो सिस्टीन वाली साइड से कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा। और ये सब आप देखते कैसे हो? बहुत सिंपल, आपको बस साइज कंपेयर करना है। साइज कैसे आ रही है, कितनी चेंज हो रही है, किस प्रोटीन से साइज बढ़ रही है, किस प्रोटीन से साइज नहीं बढ़ रही है। तो सिंपल यूवी विज, टीएम इमेज या इसे कहते हैं लाइट स्कैटरिंग, इनसे आप बता पाओगे कि आपका कैसा प्रोटीन चाहिए गोल्ड नैनो पार्टिकल को कितना स्ट्रांगली कोट करने के लिए। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि कैंसर सेल्स में या किसी भी पर्टिकुलर सेल में जाने के लिए आप किसी भी प्रोटीन को सेलेक्टिवली अपने गोल्ड नैनो पार्टिकल पे कोट कर सकते हो, पर कौन सा प्रोटीन रहे और अगर मुझे बहुत स्ट्रांगली कोट करना है तो मैं कहाँ पे सिस्टीन लगाऊं। इससे ये तो समझ आ गया कि कहीं पे भी सिस्टीन लगाने से काम नहीं चलता, आपको सिस्टीन वहीं लगाना है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक साइड को इंटरफेयर ना करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक को वैसा ही रहने दे और फिर आपका सिस्टीन रोल में आए और वो नैनो पार्टिकल से इंटरेक्ट कर पाए। सो बेसिकली बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग डिजीजेस में कौन सा प्रोटीन है जो सरफेस पे आता है, और आप उन सारे डिजीजेस के प्रोटीन्स को सेलेक्टिवली सिस्टीन लगा करके अपने गोल्ड नैनो पार्टिकल पे कोट कर सकते हो और फिर उस बीमारी का ड्रग भी लगा सकते हो जिससे सेलेक्टिवली वो गोल्ड नैनो पार्टिकल आपके उन सेल्स में चला जाएगा। सो ये नैनो पार्टिकल्स और प्रोटीन की इंटरैक्शन की अंडरस्टैंडिंग आपको इनेबल करती है किसी वीक प्रोटीन को स्ट्रांगली नैनो पार्टिकल से इंटरैक्ट कराने के लिए, और दूसरा कि अगर मैंने अब इंटरैक्ट करा लिया है तो वो किन सेल्स में जाएगा। सो बेसिकली टू गिव यू द सेलेक्टिविटी एज वेल एज द फंक्शन you need to understand interaction between gold nanoparticles and proteins. तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े गोल्स लेकर के चलते हैं। सो दिस इज नॉट ओनली द गोल वेयर पीपल वांट कि हम एक नैनो पार्टिकल को ड्रग से कोट करें और वो किसी सेल में जाए। आपने जेनेटिक डिजीजेस के बारे में सुना है और लोग कहते हैं कि अगर किसी के पास कोई जेनेटिक डिजीज है वो क्योर करना मुश्किल है क्योंकि जेनेटिक डिजीज आपके डीएनए का फॉल्ट है। नैनो पार्टिकल्स एक ऐसा होप देते हैं फ्यूचर में कि आप जेनेटिक डिजीजेस को क्योर कर पाओगे क्योंकि नैनो पार्टिकल्स एक टाइनी मशीन्स की तरह काम कर सकते हैं। तो मुझे ये वीडियो मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर का, एंड आप इसे देखो कि हाउ आर पीपल ट्राइंग टू मॉडिफाई गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। दिस इज अ डीएनए विद अ nick here. The DNA is broken. This is also a condition of genetic disease only.
So you detected the site of nick using a nanoparticle. You can use another set of nanoparticle to bring the missing portion and attach it to the site where it was needed. You can also basically replace a nucleotide, put another nucleotide, and this is all possible only if you coat your nanoparticle with the right protein. So ये मेरा ग्रुप है और ये प्रोफेसर ASR कोटी जिनके लैब में मैं काम करती हूँ, और हमारा ग्रुप यही समझने की कोशिश करता है कि आप प्रोटीन्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो फॉर सेवरल पर्पसेस. I try to work on protein modification to understand how will they interact with gold nanoparticles, but my lab does a lot of protein modifications to understand many different things. So my lab basically studies protein at single molecule level. आप एक एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल को लेते हो, बिल्कुल जैसे where you have to believe that this is protein, और इसमें बहुत सारे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होंगे. हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम इन लाखों प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में से किसी एक पे फोकस करके उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं. मेरा लैब फोकस करता है बेसिकली प्रोटीन को सिंगल मॉलिक्यूल पे उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए. And what I presented was my work on protein and gold nanoparticle to modify your protein so that it's strong. It interacts strongly with your gold nanoparticles. So with that, I think it's time. So I will conclude. Protein will have. Then the protein will have more charge. No, it is not only because of the charges. So every single chloride ion is free at its own. It will have more entropy. In scientific term, we say it will have more entropy. But the charges on protein, even they are low, they are localized at some region. So let's say one chloride can act on its own, but one protein can take 10 to 15 charges localized in a region. So many chloride molecule will not be able to replace that one protein which has localized charge and sitting onto the protein. So this is how proteins coat strongly. Yeah, I think you had a question. Lysine I selected because of? Yes, yes. Okay. So do you know the structure of arginine? Yeah. So do you see any conjugation there? Yes. But charge on lysine is not conjugated. It is localized on your NH2. So it gets positive because there is NH3 plus. So most of your biological functions happen at pH 7.4. And at pH 7.4, this is positively charged. Okay. And it is localized on nitrogen. But the residue that you mentioned, the charge is delocalized. So the effect of that positive charge is relatively less. Definitely, if you have lysines in between arginines or arginines around your lysine, the net positive effect increases. So you can also design a protein where you have more arginine surrounded by lysines. Yes. Yes, yes. Comparing number of bonds, it's the covalent bonds. So they really compare. How is it better to have lesser covalent bonds than go to deeper bonds? Okay. If you compare the size of protein and nanoparticle, so this is one thing that you always take into consideration. Now, suppose you have a protein of 10 nanometer and your gold nanoparticle is of 20 nanometer. Even 1 or 2 covalent bond is enough. But if you have a bigger nanoparticle and smaller proteins, it is better to place as many cysteines as possible, but keeping in mind that you don't rupture the electrostatic interaction between gold and protein. Yes. Is there something having something more or less than the other? Like I would say if you
if you maintain a moderation, that is better, because the more, suppose you have protein which is strongly coating your gold nanoparticle, but your gold nanoparticle in future is needed to be recognized as a foreign substance. Now, if the proteins are coating your gold nanoparticles strongly, it might be the case that they are never recognized as a foreign substance and are never getting excreted from your body. So a moderation will be better. Human clinic, not, yes. Okay. So he asked basically, are there any human trials of nanoparticle coated with proteins or any biomolecules? Thus far, no. Cost of? Okay. So the drug making cost, that is going to be there, okay, because you're ultimately going to coat the drug, but definitely you will need lesser drugs here, okay, because most of the doses is defined like how many of how many of your drug molecules are wasted in your body, okay, but here since you are seeing that there is no waste, so drug cost is there, and gold nanoparticles are very cheap to make. It's very cheap. So you can also estimate it. There are different types of ruby glasses, if you know. So you get cheaper ruby glasses as well. So also it depends on what size do you want to make. So the size that I dealt with, it is very cheap to make. So it is not that cost non-possible. It is a possible thing and in cost efficient way. Okay. Okay. So she asked as we saw that the nanoparticle was injected through blood, and then the question was, is it possible to detect all types of cancer and ultimately cure all types of cancer? So answer to that is, it is not necessary to inject through blood, because if you remember the mice slide, yeah, you can also there. I am not from medical field, but I know that there are many kind of injections that people get, few in tissues, few in cells, few in neurons also. So here the injection was a tissue in tail, okay, and so was here. So it was in tissue. Yeah, you can basically use it for any type of cancer, because most of the cancer have this property of eating up too much glucose. Most of the cancer cells eat up too much glucose, take too much of protein. Okay. So if you just recognize that what kind of cell will have what kind of protein, cancer cell, you can simply put that protein on a gold nanoparticle, and a gold nanoparticle is tunable enough to go into any type of cancer, and you can treat it through radio or chemotherapy. Yeah, people are investigating on platinum and silver. Silver is not a very good option as it gets easily oxidized. Platinum is one of the good options, but its size is not very tunable. Yeah, it's okay, it's okay. I think UK, yeah, it is tumor implantation. So I don't know. I think there is lab in our department, chemistry only, Malay's lab. So they do extensive studies, cancer study. So they induce tumor in mice, and then so how they induce, I don't have very good idea, but yeah, people induce tumor in mice, and then they study the effect of drugs. Yes. Yes. Okay. So the question is that cancer cells don't display the proteins on the membrane. So how tunable are protein coated gold nanoparticles to go into cancer cells? Am I right? Yeah. Well, I think most of the cancer cells that I have read,
have a protein profile on their membrane. Okay, some protein might be overexpressed means some protein might be more in number in certain cancer types, but most of the cancer types have certain proteins on their surface. And this is how they function, because the nutrients that cancer, as I said, cancer cells are continuously dividing cells. To divide continuously, they need continuous energy and they need continuous food. And food is taken inside the cell using these proteins only. The receptor on membranes are made up of proteins. Most of the receptors, not all, but most of them are made up of proteins. So every cancer type have certain protein on their surface. This is something which can't change. Like cells have to have a membrane, and membrane have to have proteins. Yes, yes, please. Don't. They lost the, okay, inhibition. Okay. Okay, this is not okay. The question was that if you have nanoparticles localized in cancer cells and you're treating it through radiation, what are the chances that almost cancer cells are killed there such that no cancer traces are there? Well, this is a problem that doctors face, but with nanoparticles you can get precision of every cell, which is difficult in normal radiation. I am not a medical expert, but this much I know that it is a very difficult situation where you have to localize the radiation such that it falls only on the cancer cells and on all the cancer cells and not on the healthy cells. Now, suppose you have selectively labeled those cancer cells. These nanoparticles for sure will not differentiate between the cancer cell which is buried or the cancer cell which is on surface. They will go in all the cancer cells. And as long as your cells are filled with these gold nanoparticles, it will be very easy to kill them. So the chances of leaving the traces of cancer cells will be less if there are gold nanoparticles in the cells. Is it possible to compare detection of cancer cells in gold nanoparticles comparison with the existing methods? Is this method more sensitive? It can catch the development far earlier than the current methods can? Okay, so I think one such study has been done on mice, where definitely it makes the like detection process very easy, because for detection all the techniques that are there, they rely on contrast agent. Okay, and people use heavy metal at contrast agent. Now, since gold nanoparticles are heavy metals, they will act as contrast agent, and they will be particularly in the cells which are cancer causing. And okay, sorry, I think I lost the track in which I was going to answer. Yes, definitely, because as I'm telling that gold nanoparticles are modified such that they go into the cell. Now those contrast agents are injected inside the cells, and definitely they will diffuse away. But gold nanoparticles will be localized into the cell which are cancerous, because the membrane will be such that they will welcome the gold nanoparticles. So definitely it is going to give you a better contrast. Also, it is more invasive. It can go inside those cells which are not possible. It is not possible to inject the contrast agent into those parts of the bodies. But gold nanoparticles, since they go through your bloodstream, and that can cover any part of your body. It can go into any cancer type, be it bone, be it blood, be it tissue, and it will be easy to detect them. Hopefully, more efficient or more effective over these. Yes, yes. Not only gold, any nanoparticle which is coated with biomolecules will be more effective than the traditional method of detection of cancer. Studies, okay. Since, yeah, I think 15, 20 years. Yes. Yes. In fact, okay, iron nanoparticles are already there in market. Okay. And they are used to treat acute anemia cases, particularly in case where there are operations in kidney and most of the blood iron is lost there. So now already gold nanoparticles are there in market. Some silica nanoparticle is there in market. So I think gold nanoparticles are next. What are the
Oh, challenges now. As I said, the studies are done on mice. Mice is relatively smaller body. Human body is 1,000 times complex than mice. So we don't have proper understanding of human circulatory system. Okay, so you cannot target few of the regions of cancer using your blood circulatory system. Like your blood circulatory system stops here; it does not go to brain. It also stops in certain parts of the body. So I think we lack here that we don't understand our physiology properly. So it can be applicable into those regimes where we understand our physiology very good. Yes. No, they are mostly existing proteins. Okay, but yeah, if you have a profile, a spectra of protein on which you study, you will have enough understanding to design a protein at yourself, because proteins are nothing but permutation combination of amino acids. Okay, now suppose I showed this protein where it was told that this lysine and this lysine are important. I can also take only this peptide, this part of the protein. Okay, this will be also called a protein with only those lysines which are important, and I can even surround them with arginine. But yeah, I can do them if only I have an understanding, and you get the understanding by exploring like millions of proteins. But yeah, so we can definitely design proteins for better coating on nanoparticles. Arey, don't be shy. It's okay. You replace this. I am not fully aware of this thing where cell replacement is there. Can you please tell me? Then I can think as a biomolecule. Cells are extracted, modified, and then placed back. Okay, okay. This is quite new thing to me. I will read. Huh? T cell. Okay, okay, okay. T cells. Yeah, definitely. What? Ah. Okay. I think I will have to read about it since I do not know about the therapy. I think it will be right not to comment on this. Yes. So T cells are modified and then placed back. Hmm. Okay. Okay. I think T cells are there. So cell, as far as I understood from your conversation, it's a cell thing which is going. Cell coating on nanoparticle is difficult. It is very difficult. You can send you can take those cells and try sending nanoparticle inside them and then locate if it is going at the right place. Definitely you can track the location of your cells. But yeah, you cannot coat cells onto nanoparticles because cells are 5 micrometer or something and your nanoparticles are 20 nanometers. So yeah. So which one? Yeah, oh, okay, we synthesize it. Yes. So we don't, bacteria do. We have DNA and we give DNA to bacteria and they make the protein. So if we want the mutations, we mutate the DNA and then we again give the mutated DNA to our bacteria and it makes the protein. Yes, yes, it is. Ha. Ha. You're not properly audible. Can you start? Ha. Ha. Hmm. Why not use directly the cysteine?
That's what I did actually. I mutated 42 and 7 individually to cysteines. Okay, and I saw that when I mutated 42 to cysteine, the interaction didn't happen. But when I mutated 7 to cysteine, the interaction happened. And that's how you predict that since 42 is here and the interaction is happening, 42 is definitely needed. But when you compared this, where 42 is there in both the cases, and this is cysteine, the interaction happened here. Most of these proteins were sitting onto nanoparticle. So you need 42 lysine to enable cysteine at 7 position to bind to your gold nanoparticle. Hypothesis simple. If you have 42 here, then only this protein goes and sits onto nanoparticle. And because as I said, cysteine bond formation is a slow process. Electrostatic interaction is a fast process. So this happens very fast. And without this happening, this protein cannot reorient to bring this cysteine onto nanoparticle. So definitely, it is not that simple that if you mutate the lysines to cysteine and it will go and interact. You have to wisely mutate the lysine, that it does not hamper the electrostatic interaction. Sorry? Platinum? Oh, size tunability. Size and shape both. Gold nanoparticles are not only spherical, you can make rod-shaped gold nanoparticle as well. And you can basically vary the shape and size. But with platinum, it is very difficult to reduce and control the size as well. Like here you saw that I showed you 2 sizes of gold nanoparticles. It was very easy for me to make. I just varied the time of heating. Okay, one was heated for 15 minutes, other was heated for 10 minutes. For platinum, it is difficult. You need many controlled conditions to tune the size. And if you are spending that much money and time on controlling the size, then definitely the next step is even farther. Huh? Yes. Yeah, nanoparticles are nothing but carriers. Platinum are also nothing but carriers. So you want to spend less time and money on carriers and study more about the what proteins and biomolecules can do. So the easier it is, the more convenient it is for you to go ahead with your experiments. Okay. Okay.